Hello and welcome back to Shorthand Pro. I'm John. I hope you all are fine. I welcome all of you today in my live class where I will provide you three dictations. One dictation is a general matter dictation. It will be given for stenotypist. Its speed will be 60 words per minute. The second dictation for today is a mixed matter dictation. It will be given for junior scale stenographer and its speed will be 70 words per minute. The last dictation for today is a legal matter dictation. It's for senior skilled stenographer and its speed will be 80 words per minute. Besides these dictations, you will be shared some 5 new unheard words which I believe you must not have heard till date. And along with these dictations, I'll upload shorts for tomorrow. The tough wording in these dictations उनकी outline आपको उनकी आउटलाइन आपको कल शॉर्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है. सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड विजिट देयर. वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट्स बने हैं, डिक्टेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव भी हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं. और हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा क्योंकि आपको इन डिक्टेशंस का PDF फॉर्मेट जो है वो आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा, ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन. मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, कोई इशू मत है मेरी आवाज़ में. Okay. Are you ready to write down the dictation? If you are ready to write down the dictation, please mention in comments so that we can start straight away. Okay. Get yourself ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. The East India Company was established in 1600, under a royal character granted by Queen Elizabeth the First. Stop. It began as a group of English merchants, whose purpose was to trade with the East Indias. Stop. Very soon, however, the company turned its attention towards India, where the trade of spices, textiles, indigo, saltpeter, and later tea, promised greater profit. Stop. At first, it was only one competitor among others, facing challenge from the Portuguese, the Dutch, and the French. Stop. Yet, through careful diplomacy, strong military power, and clever alliances, the company slowly became dominant. Stop. By the middle of the 18th century, its
character had changed. Stop. After the famous Battle of Plassey in 1757, and the Battle of Buxar in 1764, the company moved from being a trader to becoming a ruler. Stop. With the grant of Diwani rights in Bengal, Bihar, and Orissa, it obtained the power to collect revenue. Stop. From that time, it was not only trading, but also governing large parts of India. Stop. The company introduced new systems of revenue, new regulations, and even created a professional bureaucracy. Stop. But at the same time, many of its policies harmed the people. Stop. Traditional industries declined, and heavy taxation often worsened famines. Stop. As years passed, anger grew among soldiers, peasants, and rulers, because the company ignored local customs and acted with great arrogance. Stop. This dissatisfaction finally led to the Great Revolt of 1857, which shook its authority. Stop. After the revolt, the British Crown decided to end company rule. Stop. By the Government of India Act of 1858, all powers were taken from the company and given directly to the crown. Stop. Thus, the East India Company, which had started as a private trading body, ended as a political ruler, leaving a legacy both important and controversial in Indian history. Stop. End of dictation. आई अपोलोजाइज फॉर माई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हेयर। यहाँ पे मैंने एक जगह पे नाम एक था रॉयल करेक्टर पढ़ा है मैंने इसको, दरअसल ये रॉयल कार्टर है, ठीक है। और एक जगह पे मैंने ईस्ट इंडियाज पढ़ा है, ईस्ट इंडीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, आप देख लेना। एक यहाँ पे ये है रॉयल करेक्ट कार्टर और दूसरा है ईस्ट इंडीज। सो इनको ठीक कर लेना। So before we move to the next dictation, are you ready to write down the second dictation for today? क्या आप सब तैयार हैं आज की दूसरी डिक्टेशन लिखने के लिए? इंडीज है, इंडीज, ईस्ट इंडीज, INDIES, इंडियाज नहीं है, ठीक है, इंडीज है ये, ठीक है, ओके। Now be ready for the mixed matter dictation. It will be for junior scale stenographer. Its speed is 70 words per minute, ठीक है। 70 words per minute में आपको ये डिक्टेट कर दिया जाएगा। प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। एक मिक्स्ड मैटर डिक्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब तैयार हो जाओ, ठीक है।
Be ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. Human anatomy explains the form and arrangement of organs, while physiology describes how those organs work. Stop. The body is made up of systems, each with a special role. Stop. The skeletal system provides shape and support, and protects delicate organs. Stop. The muscular system enables movement and posture. Stop. The circulatory system, led by the heart, carries blood, oxygen, and nutrients throughout the body. Stop. The respiratory system supplies oxygen and removes carbon dioxide. Stop. The digestive system breaks down food into energy, while the excretory system removes waste. Stop. The nervous system controls actions and responses, and the endocrine system regulates growth and hormones. Stop. The skin defends the body, and the immune system fights disease. Stop. Together, these systems work harmoniously to maintain balance, which is known as homeostasis, and to ensure the survival of human life. Stop. The High Court holds a place of great importance in the system of justice. Stop. It acts as the guardian of law and ensures that the rights of citizens are protected. Stop. Though every district has subordinate courts to deal with daily disputes and trials, the High Court is needed to supervise them and to correct errors, if any, in their decisions. Stop. It hears appeals from lower courts, reviews complex cases, and interprets constitutional and statutory provisions with authority. Stop. The presence of the High Court in every district, either directly or through its bench, provides easier access to justice for common people, who may otherwise struggle to approach distant places. Stop. It also ensures that uniformity of law is maintained across the state. Stop. By exercising control, giving directions, and upholding the rule of law, the High Court strengthens democracy and promotes public confidence in the legal system. Stop. In a major judicial development, the Supreme Court has weighed in on a contentious inheritance dispute under the Hindu Succession Act. Stop. The court examined whether a childless Hindu
widow's property should, comma, upon her death without a will, comma, revert to her husband's family or her natal family. Stop. During the hearing, comma, the justices observed that a woman's gotra, her ancestral lineage, traditionally changes after marriage, comma, which carries implications under customary law for inheritance. Stop. The case promises to influence how courts balance modern statutory rights with traditional practices. Stop. End of dictation. आई होप डिक्टेशन आपको अच्छी लगी है। तो यहाँ पे एक व्यूअर पूछ रहा है वॉइस नॉट गुड, क्या मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही आप सबको? आपको आवाज नहीं आ रही है? तो डिक्टेशन आप लोगों ने सुना, डिक्टेशन में कोई इशू है आप सबको? हाँ, इसमें कोई इशू है। ठीक है, अब कैसी आ रही है आवाज बता दो। आपको जो हमारी सेकंड डिक्टेशन थी इसमें कोई इशू आया आपको? ठीक है, तो डिक्टेशन आप लोगों ने सब अच्छे से सुनी, ठीक है? ओके, ठीक है। नाउ अब हम जो हमारी लास्ट डिक्टेशन है वो आपको डिक्टेट करते हैं। तो उसके बाद आपको मैं वो नए 5 वर्ड्स ऐसे बताऊंगा जो आपने पहली बार सुने होंगे, ठीक है? जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा और अब सुनोगे पहली बार, ठीक है? उसकी स्पेलिंग भी आज मैं आपको इसी में लाइव में बता दूंगा और उसकी जो आउटलाइनिंग है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसी लाइव में, ठीक है? डिक्टेशन के बाद में। और साथ साथ जो हमारी ये टफ वर्डिंग है जिनको बोल्ड किया हुआ है, इनकी आउटलाइन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। उनके लिए आपको कल मॉर्निंग में एक शॉर्ट्स मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ठीक है? ओके, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिक्टेशन। ये डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे डिक्टेट कर दिया जाएगा। लीगल मैटर डिक्टेशन है, ठीक है? Get yourself ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. The substantial question of law involved in these civil second appeals is semicolon whether in terms of order 2 rule 2 CPC comma subsequent suits would be barred despite the averments made by the plaintiffs in their previous suits to the effect that the plaintiff however reserves his right comma to file a suit for permanent prohibitory injunction / possession or specific performance as the case may be for the possession of the shop in reference simultaneously or even subsequently. Stop. Order 2 Rule 2 CPC reads as under: suit to include the whole claim. Stop. Every suit shall include the whole of the claim comma which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action semicolon, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. Stop. Relinquishment of part of
claim stop where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished stop omission to sue for one of several reliefs stop a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs semicolon but if he omits except with the leave the court to sue for all such reliefs he shall not afterwards sue for any relief so omitted stop for the purposes of this an obligation and a collateral security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action stop a lets a house to B at a yearly rent of rupees 1200 stop the rent for the whole of the year 1905 1906 and 1907 is due and unpaid stop a sues B in 1908 only for the rent due for 1906 stop a shall not afterwards sue B for the rent due for 1905 or 1907 from the bare reading of the above rule it is manifest that where a person is entitled to more than one relief in respect of the same cause of action as a general rule he has to sue for all reliefs available and if he omits to sue for any of such relief he cannot be permitted to sue afterwards for such omitted reliefs stop this general rule is however subject to the exception that he may sue for the omitted reliefs afterwards if he has been granted leave by the court therefore stop end of dictation आई होप ये डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी डिक्टेशन सिंपल है छोटे छोटे वर्ड्स इसमें हैं बट ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं तो खास ख्याल रखिएगा इन चीज़ों में तो नाउ आई स्ट्रेट अवे विल प्रोवाइड यू द वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आप नोट डाउन करके रखो वो उन वर्ड्स के को तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है पर्मा क्राइसिस ठीक है स्पेलिंग इसकी PERMACRISES पर्मा क्राइसिस ठीक है इसकी आउटलाइन मैं आपको बता दूंगा कैसे बनानी है इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लेना पर्मा क्राइसिस ठीक है पर्मा क्राइसिस में आपको इस तरह लिखना है PRMCR और SS ठीक है पर्मा क्राइसिस ठीक है यहाँ पे आप डिप्थोंग प्लेस कर सकते हैं यह है पहला वर्ड हमारा पर्मा क्राइसिस ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसको नोट डाउन करो ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद मैं आपको दूसरा वर्ड बता दूंगा ठीक है जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है दूसरा वर्ड हमारा है पॉलीक्राइसिस
POLYCRISES, पॉलीक्राइसिस, ठीक है। इसको मैं सिखाऊंगा आपको कैसे लिखना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है इसका। पॉलीक्राइसिस में आपने इस तरह बनाना है PLSCR और SS, ठीक है, पॉलीक्राइसिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद मैं आपको तीसरा वर्ड बता दूंगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड है वो है मेटावर्स। स्पेलिंग है इसकी METAVERSE, मेटावर्स, ठीक है। मेटावर्स आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कैसे लिखना होता है। मेटावर्स में आपने M बना दिया, T और VR फिर S, मेटावर्स। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद मैं आपको फोर्थ वाला वर्ड बता दूंगा कौन सा है। तो जो हमारा फोर्थ वाला वर्ड है वो है DECARBONISATION, डिकार्बोनाइजेशन, ठीक है। डिकार्बोनाइजेशन की आउटलाइन में आपको बताऊंगा कैसे लिखना होता है। डिकार्बोनाइजेशन में ऑन द लाइन डी लिखना है, डिकार्बोनाइजेशन, ठीक है, डिकार्बोनाइजेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ वाला वर्ड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको फिफ्थ वाला वर्ड बता दूंगा। वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा फिफ्थ वाला। तो कमेंट्स में बता देना कि आप लोगों ने ये पहली बार सुने हैं कि आप पहले से ही जानते हो, ठीक है, वो बता देना कमेंट में। फिफ्थ वाला वर्ड है इन्फोडेमिक, INFODEMIC, इन्फोडेमिक। इसकी आउटलाइन में आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। इन्फोडेमिक में आपने N बनाना है, FDMC, इन्फोडेमिक। हाँ, पॉलीक्राइसिस को यहाँ पे एक व्यूअर पूछ रहा है हमें पॉलीक्राइसिस की आउटलाइन फिर से रिपीट करिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा पॉलीक्राइसिस। स्पेलिंग पहले लिख लेते हैं। पॉलीक्राइसिस POLY, ठीक है, आई नहीं, POLYCRISES, पॉलीक्राइसिस। यहाँ पे मैं आपको आउटलाइन बता दूंगा कैसे लिखना है। पॉली में अबोव द लाइन P लिखना है, PL, पॉली, CR और SS, पॉलीक्राइसिस। फिर से लिखता हूँ यहाँ पे पॉलीक्राइसिस, SS, ठीक है, पॉलीक्राइसिस। आई होप ये सब आपको अच्छा लगा होगा। ये जो नए वर्ड्स हैं, आई होप कि आपने पहली बार ही सुने होंगे शायद, मेरे ख्याल से। अगर पहले बार नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनकी आउटलाइन बना के रखो, स्पेलिंग लिख के रखो, पेजेस बना लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मीनवाइल जो आपको आज की डिक्टेशन थी वो कैसे लगी, उनके लिए आप कमेंट्स में बता देना। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपके पास 5 मिनट है सवाल पूछने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉलीक्राइसिस का। उसके बाद यहाँ पे इन्फोडेमिक है, इसका भी ले लो। देन वी हैड डिकार्बोनाइजेशन, वो भी लिखा हुआ है। मेटावर्स वो भी लिखा है, एंड पॉलीक्राइसिस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। पहला परम क्राइसिस है, वो आप लोगों ने नोट कर दिया है। हाँ, जो पहली बार शायद कुछ गलती हुई होगी पहले वाली आउटलाइन में, वो ठीक कर लेना, वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने गलत लिखा था, ये ठीक नहीं है, इस तरह लिखना है। इज देयर एनी क्वेश्चन? कबीर सर, आप टफ आउटलाइन क्यों नहीं देते पहले टेलीग्राम पर? नहीं, टेलीग्राम पर अब टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोग फिर वीडियो आधा उधर देख के चले जाते थे, तो इसलिए अब वीडियो में ही प्रोवाइड करना है। और इस तरह बिल्कुल साफ समझ आ जाता है, तो कोई सवाल होगा यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। फिर टेलीग्राम में मुश्किल होता है क्लियर करने के लिए। इनहेरिटेंस आउटलाइन, उसकी आउटलाइन मैंने सटलेन जी बनाई हुई है, आपको वो मिल जाएगा। उसके लिए कल शॉर्ट्स होगा, 1 मिनट का शॉर्ट्स है, वो देख लो, वहाँ से बहुत सारे वर्ड्स की आउटलाइन बनी हुई है, वो आपके लिए वैसे हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है।
Is there anything I can do for you? कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। सर ट्रांसक्राइब करने के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? नहीं जी, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर love and support. Keep sharing my videos with your friends, and if you need any kind of help please do message me. सर फिर हम आपसे ट्रांसक्रिप्शन कैसे चेक करें सर? तो उसके लिए आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। नोटपैड में टाइप कर लिया करो, उसके बाद उसका प्रिंट आउट या तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप वर्ड एमएस वर्ड में पेस्ट करके वहां से ऑटो करप्शन ऑन करके, ऑटो करप्शन चेकिंग, स्पेलिंग चेकिंग ऑन करके वो देख सकते हो कितने एरर्स हुए हैं। ठीक है, तो आई प्रेफर कि आप वही मैनुअली ही चेक करो, क्योंकि देखो अगर आप सॉफ्टवेयर्स में चेक करोगे ना तो आपको अपनी गलतियों का पैटर्न समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो तो जब आप भी कोई भी पैसेज लिखोगे, ट्रांसक्राइब करोगे सॉफ्टवेयर में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों की गलतियों का क्या पैटर्न है। वो तो आपको विद इन सेकेंड्स में एरर्स बता देगा। हाँ, आपका टाइम बच जाएगा उससे, बट आप उस तरह इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटर फॉर यू इज जस्ट टू यूज, लिखो, राइट योर ट्रांसक्रिप्शन इन नोटपैड एंड देन पेस्ट इट टू एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में फिर वो पेस्ट करना है, लिखना नहीं है एमएस वर्ड में, लिखना नोटपैड में है, फिर एमएस वर्ड में पेस्ट करना है। वहां से आप गलतियों को नीचे अपने कॉपी पे लिख के मार्क कर सकते हो, या प्रिंट आउट निकाल के खुद मैन्युअली गलती निकाल सकते हो। वो बहुत बेस्ट तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। नो डाउट आपका टाइम बचेगा सॉफ्टवेयर्स में, बट इम्प्रूव हो जाएगा आपको वैसे। ठीक है, सर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट में सैलरी कितनी होती है और स्टेनोटाइपिस्ट कितनी होती है? उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तकरीबन 10,000 का फर्क होता है स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर स्केल में, 10-15,000 तक का, बस उतना नहीं है। और सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, यू कैन टच मोर देन 70-60,000। ठीक है, उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर बहुत मज़ा है। जब आप एक बार लगोगे स्टेनोग्राफर, उसके बाद आपकी लाइफ बन जाएगी, बिलीव मी। Okay, thank you so much for watching our video. I truly appreciate your efforts and your hard work. You are dedicating your precious time in writing down the dictations, taking suggestions from everyone. हमारी वीडियोस को शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं जो सबके लिए बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। दिन में हर दिन में 2-2 3-3 वीडियोस की प्रैक्टिस कर लिया करो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।